Good afternoon, class. Today we are going to start speed. In the class, we have discussed about what distance and displacement. Is the two things the same? Is distance similar to displacement? Is distance and displacement the same? No, ma'am. How are you going to define displacement? How will you define displacement? What is this displacement? It is the shortest distance traveled from where to where? Ma'am, From the shorter distance measured from initial to the final position. okay, so the distance covered, shortest distance, not the distance, the shortest distance covered from initial to final is called what? Displacement. And what is the distance? In which way are you going to define distance? Distance may be a long distance also, it may be a short distance also. We have discussed at a stretch with many different examples. जैसे कि मान लो यहाँ पे आपका कोई पॉइंट है O, बीच में C है, B है, and क्या है A है. Okay, so we are moving from O to A. We are moving from O to A. Is it or not? So Yes, ma'am. displacement may be a positive value, a negative value, or it may be a zero value also. So what is the condition in which displacement will have zero value? In which condition displacement will have zero value? We have discussed in the class. When it will be a zero value? कब होगा? जब इनिशियल और फाइनल क्या हो जाएगा? कोइंसाइड हो जाएगा. When initial coincides with the final, then the value of displacement may be zero. Okay, मान लो 0 to A कितना है? 60 किलोमीटर है. O to A is what? 60 kilometer. And AO is what? 60 kilometer. तो जब हम final minus initial निकालेंगे, then what are we going to get? We are going to get a zero value. Value will be what? Zero. So in that condition, displacement is going to become what? Zero. वो आपका क्या हो जाएगा? Zero हो जाएगा. लेकिन distance क्या होगा? अगर हम distance की बात करेंगे, अगर हम distance की बात कर रहे हैं, तो distance total क्या हो जाएगा? OA plus AO is equal to what? 60 plus 60 kilometer. That is equal to what? 120 kilometer. ठीक है? Okay, class? Yes, ma'am. Distance will be the total distance. OA से AO ये आपका total distance हो गया. लेकिन displacement क्या हो जाएगा? That will be the shortest distance ना? तो shortest distance हम कैसे निकालते हैं? Final minus initial. तो फाइनल क्या था आपका? 60 किलोमीटर. और इनिशियल क्या है? वो भी 60 किलोमीटर है. तो 60 माइनस 60 क्या हो गया? 0 हो गया. ओके. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this was about what? Distance and displacement. So distance is the total area covered and displacement is the shortest distance from initial to final. That is called what? That is the displacement. That is considered to be as a displacement. यहाँ पर फिर हम एक और टर्म यहाँ पर आता है, डिस्टेंस और डिस्टेंस के बाद जो नेक्स्ट टर्म आता है, दैट इज स्पीड. What is sorry?
Uniform and non-uniform motion. Before speed is what? Uniform and non-uniform motion. So यूनिफॉर्म मोशन हम किसको कहेंगे? तो आप लोग एनसीईआरटी बुक में यहाँ पे देखेंगे टेबल 8.1 table 8.1 you can see that so what we were talking about uniform motion and non-uniform motion. तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, जैसे यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 9:30 के बाद 9:45 9:45 के बाद 10 के बाद 10:15 के बाद 10:30 डिस्टेंस कितना हो रहा है 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर ओके। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, टाइम इंटरवल इज सेम. व्हाट इज द टाइम इंटरवल? टाइम इंटरवल इज ऑफ 15 मिनट. Yes, ma'am. And distance covered is also same. After every 15 minute, how much kilometer is covered? How much distance is covered? 10. 10 kilometer. So if there is uniform motion, if the motion or change of position of the object is uniform, that is Yes. equal time interval cover equal distance in equal time interval equal distance is covered. Okay? इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है, देन सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड व्हाट? कैसा मोशन कहलाएगा? Uniform motion. Uniform motion. ठीक है, हर 15 मिनट के बाद हम क्या कवर कर रहे हैं? 10 किलोमीटर ही कवर हो रहा है. जब आप गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, अगर गाड़ी है घर पे या गाड़ी तो आप लोग ट्रैवल किए ही होंगे 4 व्हीलर से, तो जहाँ पे ये क्या स्टीयरिंग होता है वहां पे एक स्पीडोमीटर रहता है. क्या रहता है? स्पीडोमीटर. सो व्हाट डज द स्पीडोमीटर सेज अबाउट द स्पीड? स्पीडोमीटर टेल्स अस अबाउट द, एक ओडोमीटर होता है, ओडोमीटर टेल्स अबाउट द डिस्टेंस कवर्ड. ओके, odometer tells what? Distance covered, and speedometer tells about the speed per kilometer. Okay, whatever distance is covered in the equal of interval of time, that means it is on the same speed. जो पर आवर स्पीड होगा वो क्या होगा? सेम होगा या अनइक्वल होगा? Think and say. Ma'am, same. Will be same speed if the speed increases or if the speed decreases. If the speed increases, then the number of kilometer is going to increase, magnitude is going to increase, and if the Yes, ma'am. decreases, the magnitude is going to decrease. Okay? Okay or not? Okay, ma'am. So speedometer tells us about what? About the speed. Okay. हाँ, यहाँ पे क्या kmph लिखा होता है? kmph. तो kmph का मतलब क्या हो गया? किलोमीटर पर आवर. पर मीन्स हर दूसरे आवर में, पर आवर मतलब हर एक घंटे में क्या हो रहा है. तो अगर मान लो ये है, यहाँ पे 0 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है. If your needle is pointing at 40 only, ठीक है, it is not moving, needle is still at 40, that means your continuous speed क्या है? 40 है.
आपका जो स्पीड है वो हर घंटे पे आपका स्पीड कितना है, 40 ही स्पीड से आप चले आ रहे हैं, और इसलिए 40 Yes, ma'am. चले आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, इक्वल डिस्टेंस जो है वो आप कवर कर रहे हैं, यू आर कवरिंग इक्वल डिस्टेंस. ओके क्लास. Yes, ma'am. So in uniform motion, the time interval will be same, distance covered will be same, even the speed with which you are moving, that will be also what, same. वो भी क्या होगा, same ही होगा. Any confusion? No, ma'am. But in non-uniform motion, what happens? The thing is going to change. Okay, the thing is going to change in the same time interval. ठीक है, पर आवर अगर हम देखें 9:40 में देखें, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे पहले ये 10 किलोमीटर कवर किया, फिर ये 2 किलोमीटर कवर किया, देन 15 किलोमीटर कवर कर लिया. अब ऐसा क्यों हो रहा है? 10 किलोमीटर से स्टार्ट किए, फिर मान लो कहीं पे पुल पड़ गया, मानपुर पहुंचे, वहां पे पुल पे क्या है, जाम लगा हुआ है, ट्रैफिक जाम इज देयर. व्हाट इज गोइंग टू हैपन? You have got stuck in the traffic jam for 15 minutes. Then how much kilometer you are going to cover? Less, isn't it? Yes, ma'am. But if suppose आप आगे बढ़े और आपको क्या एकदम जीटी रोड मिल गया जहाँ पे कोई ट्रैफिक जाम नहीं है, then what is going to happen? You are going to cover more distance in that time, 15 minutes. 15 किलोमीटर पर आवर हो गया है. समझ रहे हैं आप लोग? Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस कवर्ड इज नॉट इक्वल, टाइम इंटरवल इज सेम. हम हर 15 मिनट पर देख रहे हैं, हर 15 मिनट पर हम लोग देख रहे हैं. व्हाट वी आर फाइंडिंग that no, we are not covering the equal distance just because of any obstacles or hurdles. The distance covered is not the same, and since the distance covered is not the same, so even we can say the speed also changes. जहां Yes, ma'am. है वहां पर स्पीड तो ऑब्वियसली आपका धीरे हो जाएगा, होगा या नहीं? थिंक एंड से. Ma'am, hoga. And where you are getting open road without any traffic jam, there obviously your speed is going to increase. That's why you are able to cover in 15 minutes 15 kilometer. Yes, ma'am. Okay, everybody getting the thing very clearly? Yes, ma'am. Okay, Anshuman, are you getting all the things clearly? Yes, ma'am. In uniform motion, what is there? Equal time interval covers equal distance with same speed, with uniform speed. Everything is uniform. यहाँ पर सब चीज क्या है, सारा चीज यूनिफॉर्म है. यूनिफॉर्म हम लोग स्कूल में भी यूनिफॉर्म पहनते हैं ना, स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते हैं, आप लोग पहनते हैं. Yes, ma'am. किस लिए होता है? फॉर द यूनिफॉर्मिटी. फॉर द यूनिफॉर्मिटी, nobody is rich or poor, nobody is good or bad, everyone is wear the same kind of dress from whichever caste, creed or you can say from you are coming from. आप किसी भी रिलीजियन से आए, किसी भी स्टेटस से आए, सब देखने में क्या लगते हैं, एक जैसे दिखते हैं स्कूल में. क्यों? क्योंकि वहां पर क्या है, यूनिफॉर्म. आपका स्कूल का ड्रेस जो है वो क्या है, यूनिफॉर्म. ठीक है, तो मोशन में क्या है, यूनिफॉर्म. टाइम भी यूनिफॉर्म है, डिस्टेंस भी यूनिफॉर्म है, और स्पीड भी क्या है, स्पीड इज ऑल्सो यूनिफॉर्म. एवरीथिंग इज व्हाट, यूनिफॉर्म. सो सच kind of motion is called what, where the time, distance covered and the speed is uniform, is same, is called what, is called uniform motion. But in non-uniform motion, what happens? Time taken is the same, but distance covered is different, and it's depending upon the situation. It is depending upon the situations. Okay, and with the
distance covered, the speed also changes. जहां पर टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर हो रहा है मतलब वहां पर जरूरी स्पीड क्या रहा होगा, ज्यादा रहा होगा. जहां पर कम डिस्टेंस कवर हो रहा है वहां पर स्पीड ऑब्वियसली क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा. ठीक है. Yes, ma'am. So difference between uniform and non-uniform motion I think is clear to one and all. Let's see your book. In your book, consider an object moving along a straight line. Let it travel 5 meters in the first second, 5 more meters in the next second, 5 meters in the third second, and 5 meters in the fourth second. तो बताओ ये क्या है, यूनिफॉर्म हो रहा है या नॉन यूनिफॉर्म हो रहा है? Uniform. This is uniform because in every second it is covering how much distance? 5 meters. In the first second it is covering 5, second also 5, third also 5, fourth also 5. So the time interval is uniform and distance covered is also what? Uniform. As the object cover equal distances in equal interval of time, it is said to be in uniform motion. So definition, what is the definition? If the distance on object cover equal distance in equal interval of time. If an object cover equal distance, क्या है? Equal distance in equal interval of time, then what it is said? It is said to be what? Uniform motion. The time interval in this motion should be small. Time interval should be what? Small. In our day-to-day life, we come across motion where the object cover unequal distances in equal interval of time. What? Unequal distance in what? In equal interval of what? In equal interval of time. So, what it is? What it will be? It will be what? Non-uniform motion. Unequal distances in time interval is same. Time interval is same, but the distance covered is what? Unequal. So there is non-uniformity there, and such kind of motion, change of position of the object is called what? Non-uniform motion. For example, when a car is moving on a crowded street or a person is jogging in a park, there are some instances of non-uniform motion. एक crowded आप area ले लो, crowded marketplace ले लो, or you can take a place like airport site. ठीक है? Okay, take the example. Okay, when you come from the airport side and when you come from the opposite side, that is from the Sikaria more, then to medical and then to your school. And when you are taking the road from Sikaria more to 5 number gate and then coming from airport side. So where will be uniform motion? Uniform का example कौन सा होगा और non uniform का example कौन सा होगा बताओ. Tell me. Which side will be uniform motion and which side will be non-uniform motion? This is your school. Okay, this is your school, and this is, suppose I am saying Sikaria मोड़. Okay, अब सिकरिया मोड़ से आप इधर से जाओ, ऐसे घूम के आओ. यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एयरपोर्ट है. और एक जो है यहाँ से सिकरिया मोड़ आओगे तो क्या पड़ेगा? मेडिकल होगा. ठीक है. अब इधर से आप स्कूल जाओ तो किस जगह पे आपको यूनिफॉर्म मोशन मिलेगा और किस जगह पे नॉन यूनिफॉर्म मिलेगा बताओ. मैम एयरपोर्ट वाले साइड में यूनिफॉर्म मिलेगा और मेडिकल वाले साइड में नॉन यूनिफॉर्म. क्यों मिलेगा ऐसा?
मैम क्योंकि मेडिकल वाले साइड में भीड़ रहता है। भीड़ रहता है तो ऑब्वियसली वहां पर आपका जो स्पीड होगा स्लो होगा, डिस्टेंस कवर होगा वो भी क्या होगा, स्लो होगा, वैरी करेगा, स्लो नहीं, इट विल वैरी. But in this side the road is very clear, open, so your speed is what, uniform. Okay, so I hope Yes, ma'am. uniform and non-uniform motion is clear by now to you. Yes, ma'am. The data regarding the motion of two objects A and B are given in table 8.1. Now see table 8.1. Distance traveled by object A and distance traveled by object B in meter both is given. The first table, time interval is same for both of them. For both object A and B, time interval is same. For object A, you can see that first it is taking 10 meter, traveling 10 meter, then 20, then 30, 40, 50. In every 15 minutes, it is covering 10 meter. Okay, in every 10 minutes, it is covering what? It is covering 10 meter. But in the for the object B, you can see first is covering 12, then 19, then 23, then 35, 37. So different distance, unequal distances are covered. यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्टेंस कवर्ड जो हो रहा है वो क्या है, Unequal. इक्वल है. यहाँ पर पहले तो 7 किलोमीटर ज्यादा हुआ, फिर 19 के बाद 23 हो रहा है, तो 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा हुआ. तो कोई भी यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी नहीं है. तो ये जो सेकंड वाला एग्जांपल है वो किसका एग्जांपल है, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? Non-uniform. Non-uniform. यूनिफॉर्म. और फर्स्ट वाला किसका एग्जांपल है? Uniform Uniform. motion. फर्स्ट वाला किसका एग्जांपल, यूनिफॉर्म मोशन का है. ओके ओके एवरीवन. Yes, ma'am. Examine them carefully and state whether motion of the object is uniform or non-uniform. So this we have examined carefully, that object A is showing uniform motion and object B is showing what, non-uniform motion. Measuring the rate of the motion. यहाँ पर देखो, बाउलिंग स्पीड इन किलोमीटर पर आवर इज गिवन. पहले 140 है, then 143 है, 145, 145, then 132, then 130. So what you can say, which kind of motion here it is shown? This is an example of which motion, uniform or non-uniform motion? Non-uniform. It is non-uniform motion because it is not steady. It is what? Yes, ma'am. It's changing. Look at the situation given in figure 8.2. If the boiling speed is 143 km per hour in figure 8.2a, what does it mean? What do you understand from the sign board? ठीक है, ये साइन बोर्ड पे दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर. ओके, किलोमीटर पर आवर से आप क्या समझते हैं, पहले ये बताइए मुझे. मैम कितने घंटे में कितना किलोमीटर ट्रैवल किया? मैम एक आवर में कितना किलोमीटर ट्रैवल किया? How much kilometer is covered in 1 hour? Okay, how much kilometer is covered in 1 hour? एक 1 hour. कितना किलोमीटर distance is covered, that is being indicated. It may be written like this. Okay, it is the SI unit of what? Speed. ये किसका SI unit है? ये किसका SI unit है? Speed का. Distance by time. What is the speed? What is the speed? Speed is what? Distance by time. All of you know what is the speed? Speed is equal to what? Distance by time. Distance का standard unit किलोमीटर है, time का standard unit hour है. तो जब हम बड़े डिस्टेंस को करेंगे तो हम किसमें, किलोमीटर आवर में करेंगे. अगर शॉर्ट डिस्टेंस देखेंगे तो मीटर पर सेकंड में देखेंगे. तो दिस किलोमीटर पर आवर कैन आल्सो बी रिटन लाइक दिस. ओके, पर आवर या फिर मीटर पर सेकंड लाइक दिस. ओके, सो मीटर पर सेकंड मतलब एक सेकंड में कितना मीटर. किलोमीटर पर आवर मीन्स व्हाट, 1 आवर में
कितना किलोमीटर. ओके, गॉट इट? गॉट इट? यस मैम बट स्पीड का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड होता है. मीटर पर सेकेंड स्मॉलर यूनिट के लिए होगा. अगर बिगर डिस्टेंस है, डिस्टेंस अगर बड़ा है, तब उसके लिए क्या होगा? किलोमीटर पर आवर होगा. ठीक है? यस मैम. ओके, both is correct. I'm not saying that whatever you are saying is incorrect. No, you are correct. But here whatever I have written, that is also correct. अगर हम बात करें डिस्टेंस की कि हम गया से आगरा जा रहे हैं, ठीक है, गया से आगरा जा रहे हैं, तो किस किस टर्म में हम बात करेंगे? मीटर में? नो मैम, किलोमीटर पर आवर में. आई एम सेइंग कि ऐसा यूनिट तो मीटर पर सेकंड होता है. नहीं, दोनों ही है, दोनों ही है. आप ये कंफ्यूजन हटा दो, दोनों ही है. ओके मैम. या नहीं तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि अगर मीटर पर सेकंड में, अगर किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ, तो आप इसको कन्वर्ट किस में कर लोगे? कन्वर्ट किस में कर लोगे? मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करोगे? किलोमीटर. मैम 5. देखो यहाँ पे क्या हो गया? किलोमीटर और आवर. तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू व्हाट? 1000 मीटर. और सेकंड कितना हो गया? 1 आवर में कितना सेकंड? तो 3600 सेकंड. अब जब आप इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करके क्या आएगा? 5/18 मीटर पर सेकंड. तो कन्वर्ट करना होगा तो सीधे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से. ठीक है, याद रखना, अगर किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है तो आप इसको कन्वर्ट किस में कर देंगे? मीटर पर सेकंड में. कैसे कन्वर्ट कर देंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई करके. ओके, what do you understand from the signboard? Different objects may take different amount of time to cover a given distance. Some of them move fast and some move slowly. The rate at which object move can be different. Very correct. The rate at which the objects move can be what? Can be different. Also, different object can move at the same rate. Different object तो है वो same rate पे भी चल सकता है, या किसी ऑब्जेक्ट का डिफरेंट रेट भी हो सकता है ये. One of the ways by measuring the rate of motion an object is to find out the distance traveled by the object in unit time. This is called what? Speed. इसको क्या बोलते हैं? Speed. What is speed? How can you define speed? The rate of motion an object is to find out the distance. It is what? Distance traveled by the object in unit time. Speed is what? Distance traveled by object in unit time. यही हो जाएगा आपका डिफिनेशन. डिस्टेंस ट्रैवल्ड, कौन ट्रैवल करेगा? बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम. Okay, this is the definition of what? Definition of speed. स्पीड. स्पीड जो है वो कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर है या स्केलर है? मैम स्केलर. Scalar, because it only depends upon what? Its magnitude. Speed Yes, ma'am. हमको क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड ही चाहिए ना, डायरेक्शन की तो जरूरत यस नहीं है. मैम. क्या हम नॉर्थ डायरेक्शन में जाएंगे तो कम स्पीड से जाएंगे और साउथ में जाएंगे तो ज्यादा से जाएंगे? No, ma'am. नो मैम. नो, ऐसा तो कुछ नहीं है कि डायरेक्शन पे कुछ डिपेंड कर रहा है. नॉट डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन. सो स्पीड इज विच काइंड ऑफ क्वांटिटी? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, not a vector quantity. For vector quantity we need both magnitude and direction, not for the scalar quantity. The SI unit of speed is meter per second. This is represented by the symbol meter. यहाँ पे जो लिखा, the other unit of speed includes centimeter per second and kilometer per hour. तो अदर यूनिट में हम सेंटीमीटर को भी ले लेंगे. अगर बहुत स्मॉल डिस्टेंस है तो सेंटीमीटर भी हो जाएगा. अगर उससे बड़ा डिस्टेंस है तो किलोमीटर पर आवर हो जाएगा. बट अल्टीमेटली इट हैज टू बी चेंज इनटू व्हाट? मीटर पर सेकेंड. To specify the speed of an object we require only magnitude. ठीक है, स्पीड के लिए सिर्फ हमको क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड.
The speed of object need not to be constant. In most cases, object will be in non-uniform motion. Therefore, we describe the rate of motion of such objects in term of the average speed. जरूरी नहीं है कि हमेशा स्पीड क्या होगा, सेम होगा. हर ऑब्जेक्ट का ऐसा कंडीशन नहीं हो सकता कि it will be always the same. Uniform, it may be different. So in that condition, what do we do? एवरेज निकालते हैं. ठीक है, क्या निकाला जाता है? एवरेज स्पीड को निकाला जाता है. ओके, तो एवरेज स्पीड क्या है? व्हाट इज द एवरेज स्पीड? देखो यहाँ पे एवरेज स्पीड इज इक्वल टू व्हाट? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, टोटल टाइम टेकन. ओके, speed is distance traveled by an object per unit time, and average speed is what? Total distance covered in total time taken. Okay, if an object travel a distance s in time t and then its speed v, देखो speed को जनरली हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, बट कहीं कहीं v से भी डिनोट किया जाता है, तो इट डजंट मैटर. इट इज नॉट अ पॉइंट ऑफ ग्रेट क्वेश्चन. बहुत ज्यादा इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है. It may be indicated by V or it may be indicated by capital S. So V is equal to what? S by T. Distance को हम किससे indicate कर रहे हैं? S से. Small s है. और time क्या है? Small t है. Okay. So average speed is equal to V is equal to S by T, where S is what? Okay, ma'am. Total distance. Total distance, and T is what? Total time. Total time. Let us understand this by an example. A car travels a distance of 100 km in 2 hours. Its average speed is what? 50 km per hour. The car might not have traveled at 50 km per hour all the time. Sometimes it must have traveled faster and sometimes slower than this. तो total distance covered कितना हुआ है? Total distance travel हुआ 100 और टाइम कितना है? टाइम है 2 आवर. तो जरूरी नहीं है कि ये पूरा का पूरा जो है उसका जो एवरेज होगा क्या होगा, मतलब 50 नहीं हुआ होगा. कभी मान लो कि पहले आवर में ये 48 कवर किया होगा तो दूसरे आवर में ये 52 कवर किया हुआ होगा. ऐसा हो सकता है. हेलो क्लास. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Is quite the possibility. Possibility is there. Yes, ma'am. Yes, So ma'am. in average we mean that it is not the half. It is not the half. Average doesn't mean it's completely half. It might be that sometimes it cover more distance or sometimes it cover the less distance. Up to here, do you have any problem? No, ma'am. So for today only this much. That's all for today's class. Okay. Thank you all.